So, good evening, everybody. We're back with RNTalks again. I'm founder Ranjeeta Ghai, and today we'll be celebrating Women's Day one day earlier because kal International Women's Day hai and kal Holi bhi hai. So, in advance, I'll be wishing you all both happy International Women's Day to all the strong women out there who have made their way in the man's world, and happy Holi to everyone out there जो खेलता है, जो नहीं खेलता है, जो बैठ के देखता है और जो पूरी तरह रंगों में डूब जाता है और जो खाता भी है होली के पकवान. So happy Holi and a happy International Women's Day. So today we have about influential women over here. One by one I'll be introducing you to all of them. ये सारी हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है एंड उनके इस मुकाम हासिल करने के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया है, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो आई शैल बी ब्रिंगिंग देम ऑल ऑनलाइन and introducing them to you, and then one by one we shall be talking to them all and listening to their stories of motivation, how they have been motivated. So first we welcome Rimi ma'am. She is academic coordinator, Aisha School, Faridabad. Then on screen now we have magical Sudipti. Sudipti is a motivator and influencer, and she can really make you feel on top of the world and make you forget all your troubles. Next coming online is Dr. Pallavi Vasudeva. She's also Vasudeva. She's also like her name says, Vasudha, universe. She'll connect you with the universe and motivate you और आपको आगे चलने का रास्ता दिखाएगी. Next to join me is Shireen. Shireen Vardhan Sharma. She herself is an educator और बहुत सारे underprivileged children को पॉवर्टी मार्क से ऊपर लाने का उन्होंने और उनकी जो बच्चा पलटन है ना, उन सब ने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है. अनएजुकेटेड जो बच्चे होते हैं उनको बिठा के पढ़ाना, अक्षर ज्ञान देना. नॉट ओनली बच्चास, इज द मेड्स एंड एवरीबडी. शी फाइंड्स एनीबडी अनएजुकेटेड, दे वोंट रिमेन सो फॉर लॉन्ग. दैट्स शिरीन. वो उनको पढ़ना लिखना सिखा देगी. Coming online, next our guest is Daisy Sehgal. She's also a mentor in our public school. She's been mentoring for a very long time. She's very good in coordinating things and activities plan. ऐसे आती हैं इनके दिमाग में, अगर कोई आइडिया चाहिए होता है इसके पास चले जाओ कि डेजी आइडिया चाहिए, और आइडिया की कभी कभी नहीं होगी डेजी के पास. वो एग्जीक्यूशन तुमको करनी पड़ेगी, आइडिया पूरे दे देगी आपको, उसके बाद तुमको रास्ता भी बताएगी. बट then next on screen is Dr. Kavita. Dr. Kavita, I can't see you. She's a poetess. आपका हाइड हो रखा है यहाँ पे. And Prajakta, your video is also off. मैंने ऑन तो किया है मेरे तरफ से. Shama Saini has also joined us. Shama Saini is also a mentor in Alva Public Schools. So they are busy ladies who are molding lives of children. जो कच्चे घड़े आते हैं ना हमारे पास, कच्चे मिट्टी के घड़े, ये उनको मोल्ड करते हैं, ये वो मेंटर्स हैं. सो आज इन सब से हम लोग एक एक करके सुनते रहेंगे. Their motivational stories, how they have been motivated by people in their life. प्राजक्ता, योर वीडियो एंड ऑडियो दोनों बंद है, इसलिए मे बी यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन. यहाँ से नहीं आ पा रहा है. प्राजक्ता, इफ यू कैन हियर मी, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लो. मैं ऑन कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ऑफ हो रहा है. Maybe while joining the cursor. हाँ, उन्होंने हाँ, while joining उन्होंने ऑफ किया होगा, ऑन नहीं किया होगा. So anyway, if any one of you, I know we are all very busy people now. This is coming back to my guests जो अभी मेरे साथ लाइन पे है. Anybody, if you have to convey a point in between, please do let me know. We'll come back to you.
And if you have to leave and आपके पास time constraint हो रहा है, तो भी मुझे बता देना. I'll take you up a little earlier so that we have your inputs and then you are free to leave. So that way हम दोनों को आ जाए, because I know होली है, Women's Day है, हर जगह पे बहुत तहलका मचा हुआ है, and it's like pack sessions for all. So our first guest today that I take up is Rimi ma'am. Rimi ma'am, as told you all, is the education coordinator. So welcome, Rimi ma'am. Good Welcome evening. all. Yeah, thank Uh, you. you have been a source of inspiration for so many people in your school, right? And I'm sure जब किसी को प्रॉब्लम होती है वो आपके तरफ देखते हैं in life कि रिमी मैम कैसे करें, how to get out of this problem. But I'm sure there must be some people in your life also जिनको जिनकी तरफ आप देखती होगी when you are in a problem, like looking for some guidance or inspiration or motivation from people. So who are those lucky few, those inspired souls who in turn inspire you to give your best to all of us? Yeah. So, Ranjita, I've got list of people, starting, of course, from my parents to my mother-in-law, my in-laws, my husband, my children, my colleagues in the school, my principal, my founder principal. Everyone has really played a very, very important role in my life. And I think without them, I wouldn't have survived. I just want to pay my respect and gratitude, starting with two main ladies in my life, my mother and my mother-in-law. So, my mother, she got married very early in her life, and she did her graduation only after a marriage. And she had aim that she should work somewhere. She worked for a few maybe years, but then we were there, and she had to manage the family. So when I was born, she had so many hopes and aspirations, and she wanted me to do anything and everything in life. So I really got a lot of opportunities in my life. I was fulfilling her dream, from creativity to sports to dramatics in the school to participating in the as a working with Akashwani Alvar. And then I was like in the college the president of Commerce Association initially, and so many other things. And I was like in NCC. So my parents, they really wanted me to do something great. And then they, like, I was a girl, but at that time, so many years back, maybe girls were not given so many opportunities which I got, because my parents had that dream for me. And when I got married, of course, my mother in law, she was such a sweet lady. She's no more with me, but she was a source of inspiration for me. Lot of ethics, values, discipline, all these things, cleanliness, all these things. She really adored me. She really loved me. And I am the youngest daughter-in-law in the family, so like all that kind of love I got. And my in-laws, everyone is so supportive, and when I talk to my immediate family, yes, my both children and my husband, when you are working, you need the support of your family, right? And here, I'm working as an academic coordinator, and I am like almost the founder teacher in Aisha School, Faridabad. This is my 28th session going on. So before marriage, I was here. So I've given my, heart and soul to the school. I have grown with the school, and the school has grown with me. So on this Women's Day, I really want to pay my gratitude to all the women, all who are present on this channel and everywhere across, all my girl students. I have been teaching for so long, and all my children have really grown up, and they look forward to me. And in my wing, I am the academic coordinator. So I have got 28 teachers. We are all women. And we form a very good team. Yes, as rightly said, there are so many times we as a family are helping each other. And the kind of environment we have got in our workplace is really beautiful. So I think,
I initially wanted to do to ride a bike, you know. So that time, 30 years back, I do remember I was like, after my father's life, that I want to ride a bike, and it was not a very common thing that time. So my father, you know, keeping care of the society, the norms and all. So he bought me a moped that time, which was a three-gear moped, and he told me, you know, you will get a feel of it. So that way, you know, I'm like indebted that all my dreams were fulfilled. And I think all the girls should be very, very confident. And we, as you know, the citizens of our city, of the country, we should really contribute for the benefit of the country, and we are no less than any other man in the world. So yes, that is a woman power. And I think on this International Women's Day, which is tomorrow, this is a strong and a strong message to all of us, that please do take care of yourself, love yourself, and you are important to yourself first, and then to your family, of course. So I think, Ranjita, this. That was really great, Ribi ma'am. And it's, you know, so good to know that we women can move ahead with a family support. Sometimes नहीं भी होता है, या थोड़ा सा होता है, कभी पूरा होता है, कभी कम होता है, but hota hai. And what I personally believe is, at this juncture, I thank my, not only my friends and family, but also my enemies, my foes, those who have told me कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की नहीं है. तो जिन्होंने मुझे ये बोला ना कि तुम नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है मैं करके दिखाऊंगी. और उनको गलत साबित करने के लिए मैंने कई ऐसी चीजें करी हैं लाइफ में, जो कि फिर मेरे को मजा भी आया. और देन आई वेंट फॉरवर्ड इन दैट, एंड देन आई डिसाइडेड, लाइक यू नो, जब कर ही रहे हैं तो पूरी तरीके से क्यों ना कर ले. And then I mastered in that. So I have got my enemies also to thank for that. Thank you wherever you are, if you're listening to me. You also have a great role in play in my life. I acknowledge you, and I'm happy today that you are there. Next, I'll invite Dr. Kavita, because Dr. Kavita, आपको कहीं जाना है, and you are already, मैंने 6 to 7 का आपका था, तो मैं पहले आपको ले लेती हूँ, and then we'll proceed with others. So, Dr. Kavita, we are very honored with you over here. You are a poet. You are a army officer's wife, and you are a poet. और आपका तो contribution ही life में अलग है. Your husband contributes to keeping the nation safe, working towards to keep everybody safe, while you are looking towards the, like, you know, लोगों को poetically. She is a poet, and she's got her channel Kavita Prabha, and she is very much into promoting poetry also. So मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, Dr. Kavita. I would like you to talk about people who have inspired you in life, और आज आप जहां पहुंचे हो, और यहां से आगे आपने क्या सपने देखे हैं उनके साथ, and who are the motivational factors in your life. नमस्कार रंजीता जी और सभी उपस्थित माननीय अतिथियों को नमस्कार, और सभी को, हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, और होली की भी शुभकामनाएं. स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जो आपने कहते हैं ना, जो लक्ष्य लिया है उसमें आप सफलता हासिल करें. ये मेरी आज की शुभकामना है आपके लिए. मैं बेसिकली दिल से एक शिक्षिका हूँ. पोइट तो हूँ, लेकिन शिक्षिका हूँ पहले. तो जितनी भी कविताएं, ज्यादातर मैं कह सकती हूँ 50% जो मैंने अब तक कविताएं लिखी हैं, वे मैंने अपने विद्यार्थियों से प्रेरित होकर लिखी या उनके लिए लिखी हैं, और अलग अलग विषयों पर लिखी हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षिका का काफी बड़ा एक महत्वपूर्ण ये भी रोल होता है कि इसे पढ़ाना नहीं, एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाना बच्चे का. तो यदि हम उनको प्रभावित कर पाए किसी भी तरह से, चाहे कविताओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, या अपनी बातों के माध्यम से, तो हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य में काफी सफल हो सकते हैं. तो कवित्री बनने में जहां तक सवाल है, तो मेरी माँ का पूरा इसमें कहना चाहिए आशीर्वाद है. और
मेरे लिए रोल मॉडल सबसे पहले मेरी माँ है। वो उस समय में भी उनको शिक्षा का जैसे पैशन था, उन्हें लगता था हर लड़की को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो गांव से थी और उनकी बहुत ज्यादा जो पढ़ने का मन था वो पूरा नहीं हो पाया था, जल्दी शादी हो गई थी। लेकिन उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, कम से कम 10 तो मुझे याद है कि बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, सबको गांव से बुला बुला के उन्होंने घर में रख के ग्रेजुएशन कराई। नहीं, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम भेजो, मेरे यहाँ भेजो। और हमारे यहाँ कोई ना कोई दीदी रहती थी। तो शिक्षा का महत्व मुझे उन्हीं से मिला, और कविता का उन्हें बहुत शौक था सुनने का। तो वहां से वो हमसे कहती थी कि लिखो, कि जैसे उस समय तो या तो मुशायरा आता था या फिर कृषि दर्शन आता था, जिसमें एक लोकगीत आता था। तो बहन भाई हम दो छोटे छोटे थे, वो हमसे कहती थी जल्दी जल्दी लिखो। तो हम तीनों बैठ के लिखते थे, कैसे भी वो गाना पूरा हो जाए, क्योंकि बाद में रिपीट उस समय तो आता नहीं था। तो हमारी पूरी कोशिश होती थी कि हम जल्दी जल्दी लिखें। फिर उसके बाद वो उसे अपनी डायरी में जोड़ तोड़ के लिखती थी और गाती थी। वहीं से ये शौक लगा। तो तब से मुझे ये मेरे मन में ही आया, जब मैंने पहली रचना बनाई और उनको दिखाई, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया था। और मैं तब से मानती हूँ कि बालक का जो हृदय और मस्तिष्क है ना, हृदय और मस्तिष्क जो है वो खाली स्लेट की तरह है, ये सभी जानते हैं, और ये कोट भी है कि उस पे जो चाहो आप लिख सकते हो। तो कभी भी उस पे ना शब्द ना लिखो, ना शब्द ना लिखो कि तुम ये नहीं कर सकते या रहने दो। पहले ये बताओ कि अच्छा करना चाहते हो कोई काम, क्यों करना चाहते हो, उसको फिर उसे सोचने दो कि वो क्यों करना चाहता है। उसको थोड़ी स्वतंत्रता दो, चाहे वो लड़का हो लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हैं आज के समाज में। तो ये हमें उनको आजादी देनी चाहिए। और एक चीज मैंने सीखी, जो मैं बच्चों को कहती हूँ, कि 10th में नहीं आप डिसीजन लीजिए या निर्णय लीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आपको तो 5th 6th से पता होना चाहिए। तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी है, शिक्षिकाओं की ये ड्यूटी है कि उनको ये इंस्पायर करे, प्रेरणा दे कि बच्चा ये सोचे कि वो क्या बनना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षकों को बहुत बड़ा महत्व दिया अपनी सफलता का। वे कहते हैं क्योंकि उन्होंने 5वीं कक्षा में ही ये निश्चित कर लिया था कि उन्हें पायलट बनना है, लेकिन वे पायलट नहीं बन पाए किसी कारण से। तो मुझे लगता है, और लेकिन मिसाइल मैन बन गए। तो उन्होंने तो 100 कदम की उछाल ली अपने लक्ष्य से, हारे नहीं वो। डॉक्टर कविता, आपकी एक खासियत मैं बाकियों को बताना भूल गई थी सबको यहाँ पे, कि डॉक्टर कविता इज वर्किंग ऑन प्रोमोटिंग हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी को वो आगे ले जाने की चाह रही हैं। सो एवरीथिंग शी डज, शी राइट्स इन हिंदी, एंड इनका जो पेज है वो भी इनका हिंदी में ही है। सो ये मेरे को एक चीज बताइए, ये हिंदी को इतना प्रमोट करने का आपने कैसे सोचा? बिकॉज नो, मैंने बिल्कुल इंग्लिश से हटके हिंदी के ऊपर आना एंड सब कुछ सिर्फ हिंदी में करना, इट्स नॉट इजी टास्क। माने मेरे जैसे तो बैलगाड़ी हिंदी बोलता है। सो नहीं, अब अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदी हूँ, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, पहली बात। वैसे मैं विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने टिश्यू कल्चर में पीएचडी की और काफी पेपर्स भी पब्लिश किए। लेकिन फिर वो धारा, जैसे कहते हैं ना, प्रवाह, प्रवाह जिस ओर ले जाए, जिधर मुड़ मुड़ जाओ, रुको नहीं। प्रवाह है, हम नदियां हैं, हमें बहना है। जो भी राह मिले हमें उस ओर मुड़ जाना है। सफलता हर जगह है, चाहे वो हिंदी में हो, हिंदी से संबंधित हो या अंग्रेजी से संबंधित हो। आपको काम करना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस भाषा के माध्यम से आप यह कार्य पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हम जहाँ पर बागडोगरा में हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो उनको हिंदी अध्यापिका की आवश्यकता थी। और मैं पोइट्री लिखती थी तब भी हिंदी की, और जो वहाँ अध्यक्षा थी जो हमारी अफवाह की, उनको मैं लिख के स्पीच देती थी। तो उन्होंने खुद कॉल किया मुझे कि आप ना हिंदी के लिए आप अप्लाई करिए, क्योंकि हमें अच्छी टीचर नहीं मिल रही है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं तो साइंस पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास साइंस टीचर हैं, लेकिन हम एक अच्छी हिंदी टीचर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को अच्छी हिंदी सीख सके, शुद्ध हिंदी सीख सके, एक्सेंट अच्छा हो। तो मैंने फिर कहा बिल्कुल।
तब से मैंने ये ध्येय बना लिया कि मुझे बनना तो टीचर ही है ना, अध्यापिका ही बनना था ना, शिक्षिका ही बनना है। कॉलेज में बनूं, स्कूल में बनूं, प्राइमरी की बनूं, टीजीटी बनूं, पीजीटी बनूं, हिंदी बनूं, साइंस बनूं, ध्येय तो मेरा अध्यापिका बनना था। आज मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। और मैंने फिर पीएचडी के बाद बीएड किया, फिर काउंसलिंग भी की, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, काउंसलिंग कोर्स करने के बाद आप बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ पाते हैं। और सच में वेरी मैं, ट्रू, वेरी ट्रू। तो यहीं से चलिए इसी नदी के बहाव को आपको लेके आगे जाते हैं और सुदीप्ति के पास आते हैं। सुदीप्ति, शी इज मोटिवेटर, शी इज ए इन्फ्लुएंसर। और सुदीप्ति, आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप बताइए आपके बारे में और आपके हु हैज एक्चुअली लाइक यू नो the lady or the person behind you to be what you are, magical Sudipti. तो magical Sudipti में वो मैजिक कहाँ से आता है, वो मैजिक का सोर्स बताइए मुझे। Right. So thank you so much for giving me this opportunity and very good evening to all the lovely ladies. मेरे हिसाब से इस planet अर्थ पे एक फीमेल के अंदर जितनी शक्तियाँ होती हैं ना, उसे पता नहीं है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए तो सारी दुनिया इधर से उधर कर सकती है. But she is immensely powerful. एंड वो पावर शायद मैंने पहचान ली, और इनिशियली मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था दैट आई एम मैजिकल, बट नाउ आई फील दैट आई एम मैजिकल, एंड हेंस the people who have received counseling coaching sessions from me, they have started calling me magical. I am working as a law of attraction life coach since 19 years. और साथ साथ मैं एक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड भी हूँ. एंड मुझे लोगों की जिंदगी आसानी से आसान करने में बहुत मजा आता है. आई जस्ट लव डूइंग दैट. मतलब मैं सोते सोते भी मुझे कोई बोले कि मेरी लाइफ में कुछ डिफिकल्टी है, या मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसको मैं अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे तो सास में ऐसा प्रॉब्लम है, या मेरे बॉस में ऐसा प्रॉब्लम है, या मेरी जूनियर में ऐसा प्रॉब्लम है, यू टॉक एनीथिंग एंड आई एम होपिंग दैट आई एम अ पावर हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड कहीं ना कहीं कोई टेक्निक कुछ ना कुछ निकल आएगा. और इस सब के पीछे जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ सिंस चाइल्डहुड, मेरी नानी मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही हैं. ऑल्दो शी वॉज रियली वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं जब डाइसेक्शन किया मेंढक का तो मुझसे नहीं हो पाया. एंड उससे मैं डर गई, वो मेंढक का धड़कते हुए दिल के ऊपर ऑल्पिन नींद में लगा पाई. सो मुझे लगा कि मैं वो वाली डॉक्टर तो नहीं बन सकती, बट आई स्टिल ट्रीट पीपल एंड क्रिएट दोज मैजिकल स्माइल्स कि जब मैं ना रहूं इस दुनिया में या उनकी जिंदगी में, तब भी उनके चेहरे पे वो स्माइल बरकरार रहे. मेरी नानी के पास शायद कुछ ऐसी शक्तियां थी जो मैं उनको देखती थी कि शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम शी यूज टू कनेक्ट पीपल विद अथॉरिटी, और वो मुझे बहुत पसंद था. वो बहुत डिसिप्लिन थी, सेल्फ डिसिप्लिन थी, और उनको लगता था, और मुझे भी आज ये लगता है कि यूनिवर्स अगर आपको, प्रकृति नियम के ऊपर चलती है, और अगर हम भी कुछ नियम को फॉलो करें तो प्रकृति हमें हमारे कर्मा के हिसाब से वो सब कुछ देती है जो हम उससे मांगते हैं. एंड दैट्स व्हाई द लॉ इज दैट यू आस्क एंड इट इज गिवन. आप जो चाहते हो वो सब आपको मिलता है, और यही चीज मैंने अपनी नानी से सीखी है. उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मेरे पास उस तरह की भी शक्ति थी कि मैं 5 सेंसेस के बियॉन्ड देख पाती थी, और वो मैं उनसे ही सीख पाई, और वही मेरी एक इंस्पिरेशन थी. जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि नाउ आई विल बी लाइक अबंडेंट, आई विल बी अनलव्ड, अनवांटेड. हम फीमेल्स जिस एक के ऊपर डिपेंड होती हैं ना, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देती हैं, और जब वो एक्सेस हमारा बीच में से गायब होता है तो हमको लगता है नाउ एवरीथिंग इज ओवर. बट देन आई रियलाइज्ड कि अभी वो नहीं है, पर मैं हूँ. एंड वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तू मेरा स्पेशल बच्चा है, मन्नू भाई तू मेरा स्पेशल बच्चा है. सो वो स्पेशल चीज मुझे बना के रखनी थी, और तब मुझे रियलाइज हुआ मेरी फिलॉसफी का, जो मेरी फिलॉसफी है, विच इज मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ. तो बायोलॉजिकली मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला बच्चा होने के साथ साथ मेरे 0 एज से लेके 75 ईयर्स के बच्चे हैं अक्रॉस कंट्रीज, एंड आई एम सो प्राउड डूइंग दैट
क्योंकि जब मैं किसी से बात करती हूँ, मेरा कोई भी क्लाइंट होता है, सो दे बिकम माई चाइल्ड, नो मैटर वॉट द एज डिफरेंस इज, बट आई जस्ट एंटर इन टू देयर शूज एंड मेरी एक ही इंटेंशन होती है कि अब उनकी जिंदगी आसानी से आसान होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर जो हमारा बच्चा है, अगर हम उसके साथ कनेक्ट कर जाएं तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ये मेरे पैर का कांटा है, ये मुझी से निकलेगा। मेरी ज़िंदगी को आसान करने के लिए ये मुझे ही एफर्ट लेना पड़ेगा और मुझे ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना पड़ेगा। आज थोड़ा सा टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज पेन ऑफ डिसिप्लिन इज कंपैरेटिवली वेरी ब्यूटिफुल देन पेन ऑफ रिग्रेट्स एंड गिल्ट। तो मुझे लगता है कि वो पेन ऑफ डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैंने वो ही लेना शुरू कर दिया। ये मैंने अपनी नानी से सीखा और उसी के लिए मुझे एक जिद मेरे अंदर आ गई कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद से खुद को जिताना है। और जब मैं अपनी ताकत बन जाऊंगी तो मैं किसी कोई और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जैसे कि रंजिता जी ने कहा कि मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरी टांग खिंचाई करी, वो लोग हैं, वो सब लोग मेरी ताकत बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट। बट सबसे पहले मैं मेरी ताकत हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चे की माँ हूँ और एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ती। मैं कभी भी वेरी अकेली गुड। ही नहीं होती, क्योंकि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ। और जब तक वो बच्चे के साथ मैं हूँ, वो बच्चा नहीं हार सकता और ना ये माँ हार सकती, बिकॉज दे आर ऑलवेज टू। आई थिंक डिप्रेशन दैट इज वाला अ वेरी ब्यूटीफुल टेक अवे। आई थिंक हम सबको सबसे पहले अपनी माँ खुद बनना चाहिए और खुद को बच्चा बनाना चाहिए। हम अपने अपने बच्चों को और अपने स्कूल में 250 300 400 बच्चे देख लेते हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम अपने अंदर का बच्चा ही छोड़ देते हैं अकेला, बिल्कुल। एंड वी और उसके लीव इट बाद डिपेंडेंट ऑन समबडी और द अदर कि भैया वो देख लेगा, और खुद नहीं देखते हैं। और उसमें मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी, क्योंकि हम अपने पहले बच्चे को, जो हमारी सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले ने हमें दी है, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो प्रकृति का नियम क्या कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और हम अपने सबसे पहले बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, पहले पापा खा लें, पहले मम्मी खा लें, पहले बच्चे खा लें, फिर हम बाद में 10 मिनट में फटाफट फटाफट सब फिनिश कर देते हैं। So we are ignoring ourselves, we are disrespecting ourselves, we are not giving love, care and attention to ourselves. हमारा कर्मा क्या हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, अनलव फील करा रहे हैं, अनवांटेड फील करा रहे हैं, और फिर वही कर्मा रिपीट होके हमारे पास आता है। फिर हम कहते हैं कि हमें किस बात की सजा मिल रही है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम मिट गए। राइट। मैं इसी चीज पर एक छोटा सा मैसेज अपनी सारी फीमेल कम्युनिटी को और मेल कम्युनिटी को भी देना चाहती हूँ कि सभी लोग एक फॉर्मूला याद रखें। आप सब लोग उड़ सकते हैं, बट FLY, फ्लाई, फर्स्ट लव योर सेल्फ एंड फॉलो द फॉर्मूला वुमेन। वुमेन का मतलब है W, यानी कि वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई भी इंसान आएगा और चला जाएगा, परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, पैसा आएगा और चला जाएगा, बट अगर आप खुद की ताकत हैं तो कोई माइकलाल आपको हिला नहीं सकता। वर्क ऑन योर सेल्फ। ओ का मतलब है ओ क्रेडिट टू गॉड। हमारे पास बहुत सारी डिफिकल्टी आती हैं, लेकिन उन डिफिकल्टी को हम देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट उस सिचुएशन में भी कोई एक दो लोग, कोई फैसिलिटी, कोई डॉक्टर, कोई ना कोई तो होता ही है जिसकी वजह से वो मुश्किल उतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाता है। तो ओ क्रेडिट टू गॉड फॉर ऑल दोज थिंग्स जो अभी भी आपके पास है। उसके बाद आता है M, वुमेन में WOM। M का मतलब है मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो जग मुस्कुराएगा और फिर जग घूमना शुरू कर देगा। M से आता है आप मुस्कुराइए, एंड A से आता है affirm what you want। अब इसको आगे कैसे यूज करना है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग देना शुरू करूंगी तब मैं बता सकती हूँ कि अफर्म कैसे करते हैं और अपनी वांट्स को अपनी नीड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अपनी रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हम ही ब्रह्म भी हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो तब बताऊंगी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग होगी। बट ए से अफर्म व्हाट यू वांट, एंड एन से आप नेचुरल रहना, आप जैसे हो वैसे रहना और अपने आप को अपने पास्ट से थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करना।
दैट्स ऑल. अगर कोई भी मेल या कोई भी फीमेल ये वुमेन का फॉर्मूला फॉलो कर ले तो उसकी जिंदगी आसानी से आसान हो सकती है. एंड दैट्स व्हाट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माय नानी. And that's what the message I give to all the males and females out there, in nationally, internationally, jahan kahin bhi hain. I just want to give magical dust to all of you. Thank you so much, Sudipti. That is why I call you Magical Sudipti. And that is what she calls herself, and that is how I address you also. So now we come on to Pallavi, डॉक्टर पल्लवी वसुधा विश्वास. आपके तो नाम में ही वसुधा है. So you have the universe in your name. So she is a mentor, she is a healer, she is a motivator, और ये इन्फ्लुएंसर है, और ये आपको अपने आप से, अपने अंदर की जितनी भी, she'll make you feel so confident that you, by the end of it, you'll say कि भैया I am the one. So Pallavi, would love to have you with us over here, and थोड़ा बताइए अपने बारे में, and जो इस पल्लवी वसुधा को आगे लेके जाती है उनके बारे में बताइए. Who has motivated you to be so much today? बिल्कुल बिल्कुल. Namaste and thank you for today's lovely रूबरू session that we are having. Thank you ma'am, thank you Ranjita ma'am. और जैसे आपने कहा कि मेरे नाम में पल्लवी वसुधा विश्वास है, तो बिल्कुल ये दो हस्तियां हैं. Vasudha is my mother and Vishwas is my father. So they are the two pillars of my inspiration, my motivation, and my existence. You can feel the little bit of shivering in my voice. अरे मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं यहाँ पे. Thank you. So, like, जो भी, whatever, all of us duly respect our parents, duly, like, we love our parents. But for me, this journey is much, much more than that, because I started my career as a telecom engineer. I'm a telecom engineer. और उसके बाद, of course, I became, like, it was a very, very successful career that I had. And that was, of course, what I wanted. It was, again, my parents gave me that confidence to do it. And जब मुझे like job मिलना था, I was the only girl in the technical field in my company. So you can imagine like what proud feeling it was for me, and the trust that my parents had laid upon me. And वही जो विश्वास मेरे पिताजी का नाम है. So with that trust, I am standing here today. And I've always been surrounded by very, very motivating ladies. That is, first is my mother and my two sisters. My elder sister is Dr. Vaishali Parab, and my youngest sister is Sheetal Borkar. So we three sisters and my parents, and of course, I come from a joint family, Dada Dadi the, and so many people, like we all of us have mostly come from joint families. But like we all know that in joint families, there is like support, but there is also a lot of hindrances. And back then, my parents, like they put us in one of the best schools. It's a convent school I come from, and what they gave us, like Vasudha, jaise aapne bataya, Vasudha is universe. And that's exactly what my mother is. Like she embraced not only us with love, but she embraced each one who came to our house, to our family. And believe it or not, जैसे हम लोग अतिथि देवो भव बोलते हैं, वैसे none of the person has ever gone from our home without having food. So I think all that, like it accumulates, or somewhere those blessings are there with us. And today, as I stand here, like as I said, I started with telecom engineer, then I went on to education में मैंने फिर 180 degrees sort of change किया. So I was the HOD in one of the management colleges. और उसके बाद मैंने PhD किया. That's work-life balance amongst working women. That's my thesis. And अब I am the founder of Happy Harmony. So happiness, I'm an internationally certified happiness coach. और मेरा जो venture है, Happy Harmony, it is on a mission of spreading smiles across miles. And this smile is very well given and blessed because of my parents. Because scientifically it is proven that हर एक का एक happiness set point होता है, and वो genes जो happiness genes होते हैं, तो मुझे तो वैसे ही मिल गए हैं blessing में. And इसलिए वो जो भी आज कार्य मैं कर रही हूँ, and that is the reason
I call myself as Dr. Pallavi Vasudha Vishwas because the work that I'm doing is completely and completely blessed because of my happiness genes that I've received from my parents. And Thank yes, you so much. yes, and the support that I've got from my family, of course, my son, loving son, my husband, and everybody is there to support. जैसे मैम ने भी पहले बताया, our teachers, our school, our mentors, and of course now like सभी लोगों से मैं रूबरू हो रही हूँ. So that support is going to be carried forward. And just before I take a few moments from you, I had written a poem for my mother. Like I do write, I love writing. और मेरी like debut book भी आई हुई है, From Hustle to Harmony, Master Work, Life and Happiness. That's available on Amazon. And although like my thesis in work-life balance, but I believe like whatever we do, it should be in harmony. जैसे अभी मैजिकल उन्होंने बताया कि unless we are in harmony with the space, with the energy, that happiness cannot be felt. So for anything to work, we all are a medium of energy. Likewise, we are a medium of so many things that each one is pursuing or each one is doing, all of us. So unless we are in that space of harmony, those smiles will not come across. And we will not be able to transform ourselves or others. So dedicating a poem that I had written for my mother, my existence, my mother. I'll just read it out. I could never fathom the sacrifices done by my mother, who is wearing a smile all her life. She is the woman I admire, who held my hand to realize my desire. Her life full of hardship and odds, odds that are difficult to even. She is the woman of grit, who gave me the confidence never to quit. She is the woman of solidarity who made my belief stronger in the power of unity. She is the woman of calmness who showed me the path of happiness. She is a wonderful woman, so dear, who taught me challenges are not to fear. Even when challenges seemed impossible, impossible to conquer without inner grit. Grit gave her the strength to take on the world. She is my mother, my world that she created for her loving family, family with the bliss of togetherness forever. This is my mother, my most loved inspiration, of course, my father. That is why Vasudha Vishwas I carry with so much of love and blessing. And जैसे आज हम रूबरू हो रहे हैं, so हर एक स्त्री के लिए, हर एक वुमन के लिए, आई फील वी शुड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर. एंड कुछ रूबरू अपने आप से होने के लिए सिर्फ लास्ट चंद लाइनें, एज आई से, a very happy women's day to each one present here and each one who is watching us. इंतजार न करना एक दिन सजने का, इंतजार न करना एक दिन सजने का, रोज प्यार से संवारना अपने आप को, क्योंकि तुम चांदनी हो, धरती और आसमान की रोशनी हो, तुम प्यार की मूरत हो, तुम प्यार की मूरत हो, तुम खूबसूरत दिल की धड़कन हो, तुम खुशियों की बहार हो, तुम सफलता का प्रतीक हो, तुम कर्तव्य की मिसाल हो, तुम सबका गुरु हो. So once again, wishing everybody a very happy Women's Day and thank you so much. Thank you. Thank you, Pallavi. Thank you. And we come on to Daisy. Daisy Sehgal here. Oh, कोई बात नहीं. Daisy is a mentor in Alva Public School, and she's been there for I don't know, बहुत सालों से है. How many years, Daisy? 20. 20 years. And she's been mentoring kids, छोटे बड़ों को भी डांट लगाने में चूकती नहीं है. जहां जरूरत पड़ेगी तो अच्छे से डेजी से डांट पड़ेगी, वो चाहे टीचर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो. बट इफ यू आर रॉन्ग, शी विल सेट यू स्ट्रेट very candidly. She's very honest to the core. And Daisy, you are such a, means I have met you personally, I have worked with you, and I have found you to be a very positive person जो हमेशा सबका अच्छा ही साथ में लेके चलता है. So where do you get so much of like positivity from? Who is the person behind Daisy जो Daisy को Daisy बनाते? Because Daisy is a beautiful flower also,
एंड यू स्पेल इट DAIZY, डेजी SY होता है. जरा हटके डेजी हो, सो वो जो हटके फीलिंग है ना, दैट फ्लेवर तड़का वाला, वो डेजी में कौन से इंस्पिरेशनल सोर्स से आ रहा है? थैंक यू सो मच मैम। इतना फ्लैटर मुझे कोई नहीं करता जितना आप करते हो। यहाँ सारे हम, वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड वुमेन आउट है, हमको किसी से ना जलने की जरूरत है. हम सब अपने आप से हर रोज, वी आर ऑल ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, यू नो. ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है, एक प्लेटफॉर्म है, सब इकट्ठे हैं. सो यहाँ तो हम फ्लैटर ही करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट एज जैसे सबने शेयर किया कि फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली कम्स फ्रॉम द मदर, दैट फर्स्ट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द मदर। सो मेरा मोटिवेशन भी मेरी मदर से ही मुझे मिला, बिकॉज शी वॉज नॉट दैट एजुकेटेड। तो उनको लगता था कि मेरी बेटियां बहुत पढ़े और अच्छे स्कूल में जाएं, और उनको एक ये था कि वो नौकरी करे, बिकॉज वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब ऐसा टाइम आया कि फाइनेंशियल नहीं हो पाते, instability was there, so she could not work out. तो that was one point when she was like कि बेटा आप लोग पकड़ना और हमेशा अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़े होना. That was one point which I always remember, which my mother taught me, कि अपने पैरों पे खड़े होना. और उन्होंने हम चारों बेटियों को, अपनी चारों बेटियों को, अपने सारे को ये चीज सिखाई. हम लोग पढ़े लिखे, और फादर का ये एक सपना था कि मेरी बेटियां इंग्लिश बोले. पता है उस टाइम पे था, होता था ना, क्योंकि बिकॉज था कि नया नया इन्फ्लुएंस आया था ग्लोबल लैंग्वेज है, यस एवरीबडी. हम भी अपने बच्चों को कहते हैं इंग्लिश नहीं सीखोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे. बिल्कुल. तो सभी उनका पेरेंट्स भी ये सपना था कि मेरे बच्चे किसी इंग्लिश स्कूल में जाएं, इंग्लिश बोले, और मैं प्राउड फील करूं, दैट आई फील प्राउड. सो मेरे को लगता है कि वो एक पहला कदम था, वो एक चीज थी जो मुझे लगा कि हम लोगों को पढ़ना लिखना है. और मुझे याद है मेरी पहली नौकरी भी बहुत थोड़े से रुपीस की थी, बट आई फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ और मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी है. एंड जो हमारी फैमिली में सबसे पहले जो नौकरी कर रही थी, दैट वाज माय बुआ, मतलब गवर्नमेंट जॉब में थी. तो उनको देख के भी हमें लगता था कि हमें कुछ करना है. सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. बट व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे इन लॉज मुझे इतने सपोर्टिव मिले, मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा. उन्होंने मुझे और पढ़ाया, और ज़्यादा पढ़ाया. तो मेरा वो उसमें अपग्रेड होता चला गया. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में जब आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, डेफिनेटली यू ग्रूम लाइक अ फ्लावर, एज यू सेड, देयर इज अ डेजी. वो मोटिवेशन मुझे मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, शायद अगर नहीं होते तो शायद इतना मैं ग्रूम अपने आप को नहीं कर पाती. सो माई सिस्टर इन लॉ, शी वॉज अनदर बिग हेल्प टू मी. So it was like that. A complete package came along when we when I started my teaching line this side. So that's how it happened. I'm very grateful. I'm very honored. I'm very like बहुत thankful हूँ God की कि मुझे इतनी अच्छी family मिली, इतने अच्छे friends मिले आपके जैसे, जो रोज हमें बताते हैं कि हम बहुत प्यारे हैं. It's very necessary, no? It's so easy, Daisy, to see faults in other. You know, And दूसरे की नींद में students डालना बहुत आसान है, but लाइक श्री वर्धन, इनकी मदर के साथ हमने काम किया, इसकी सिस्टर के साथ मैंने काम किया. देन दे वर द लाइक स्टूडेंट्स ऑफ माइन. सो दे न्यू दैट इट्स अ लॉन्ग जर्नी. आई हैव बीन लाइक 20 years में इनकी मम्मी के साथ काम किया, उषा मैम के साथ किया. देन मेघा वाज देयर, है ना श्री? आई वर्कड विद Yes, हर. ma'am, and you were the most good-looking teacher of our school at that time and even now. So and मुझे तो अभी भी याद है, आपने मुझे भांगड़ा सिखाया था, गिद्दा सिखाया था. And you helped me dressed as a guy. So I'm really grateful to you, ma'am. आई so डोंट अभी रिमेम्बर कैसा दैट. लग रहा है मेंटर स्टूडेंट ऑन द सेम बेसिस? एक ही प्लेटफॉर्म पे एक मेंटर भी है, स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट भी बड़ा होकर मेंटर बन गया है. सो हाउ डज दैट फील बिटवीन यू टू? यहाँ पे अभी मैं गिल्ली डंडा खेल रही हूँ बिटवीन डेजी No, एंड ma'am. श्री. हाउ डू Of यू course, फील? of course, it's such an honor to share a screen with you and Proud, Daisy, ma'am. proud Really, moment. it's a big honor. Yes, ma'am. वी फील सो प्राउड, व्हेन किड्स कम, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो हमारे साथ आके टीचर बनते हैं, अरे इसको तो हमने पढ़ाया था, अरे इसको तो हमने इस क्लास में पढ़ाया था. ऑल दिस कम टुगेदर एंड यू फील सो नाइस. मतलब हम रास्ते में चलते, सडनली कोई बच्चा आता है, पैर छूता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, एंड माय हस्बैंड विल बी लाइक, अरे ये कौन है? सडनली, अरे मेरा स्टूडेंट बन चुके.
So it's a wonderful feeling. बहुत अच्छा I लगता because I can associate it with it because when I started teaching in Alva Public School, वहाँ पे क्या हुआ? One chap came, उत्सव आया, से मैम याद है मुझे? मैंने कहा नहीं, कौन हो भाई? नहीं, नाम कि तो उत्सव उत्सव, मैंने कहा बेटा नाम तो पहचाना है बट आई डोंट। देन ही रिमाइंडेड सेंट एम्स्टर्डम में इतने साल पहले एक इंग्लिश क्वेश्चन पे अटक गया था वो बच्चा जो आपको तंग कर रहा था, मैं वही हूँ मैम। मैंने कहा अरे है। बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रहे? कहते मैम मैं ये पढ़ा रहा हूँ। And वंडरफुल। that is what happened with Dilpreet when she joined and she was like, मैम याद है I was your student, आपने 7th में मुझे पढ़ाया था सेंट एम्स्टर्डम में। I was like, oh my god, अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे ही साथ इक्वल प्लेटफॉर्म पे, and like suddenly you feel old also, you feel ancient, but at the same time you feel so happy कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मुकाम पे आ गए हैं, वो आगे पास ऑन कर रहे हैं। So it's a एंड very मैम nice feeling. बहुत अच्छा फीलिंग आता है क्योंकि वो अलवर छोटा सा जो था उसमें जिन बच्चों को हमने पढ़ाया आज उन्होंने अलवर को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया है। यू नो फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में, एवरीवेयर दे आर वर्किंग एंड दे हैव ब्रॉट अलवर हियर ऑन द गूगल। अभी मैं देखती हूँ तो मतलब दे आर डूइंग सो वेल, सो इट फील्स सो नाइस कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं। आगे चले गए। बिल्कुल आगे चलिए, चले गए, यहीं बहुत से आगे फिर चले मैं अब शिरीन पे आती हूँ। हाय शिरीन। एंड हेलो, गुड उन्नति इवनिंग। के बारे में, शिरीन उन्नति के ऊपर जो उन्नति है, उन्नति इतना कर रही है। आई हैव सीन छोटे छोटे बच्चे उन्नति में मेड्स को पढ़ा रहे हैं। कोविड में एक एक को बिठा बिठा के ऑनलाइन पढ़ाते थे। like you and your kids का gang and everybody who comes in your association, वो ये सीख लेके ही जाता है कि एजुकेशन को हमने आगे पहुंचाना है वहां तक जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। एंड देयर इज नो फी अटैच्ड, इट्स ऑल जो कहते हैं ना, दिल से मन से श्रद्धा से तुम लोग करते हो। तो ये मोटिवेशन और ये कैसे मीन्स ये जज्बा कहाँ से लाते हो? What is your motivational source? Means थकते नहीं हो? First of all, good evening to everyone, and thank you, Ranjeeta ma'am, for having me here. It's a big honor. And मैं कहना चाहूंगी कि आप सारी लेडीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. So keep up the good job that you all are doing. And happy Holi and happy Women's Day to all of you. मैम ने उन्नति के बारे में जिक्र करा है तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी उन्नति के बारे में. उन्नति इज एन इनिशिएटिव, इट्स नॉट एन एनजीओ. The reason being is that my students, they don't want themselves to be associated with any NGO. और मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है बजाय मेरा जो इनिशिएटिव है वो एक रजिस्टर्ड इनिशिएटिव बने. एंड अब सारे लोग मुझसे बड़े हैरान होते हैं कि बिना फंड्स के आप एक एजुकेशन इनिशिएटिव कैसे रन कर पाते हैं, वो भी अब नाउ इट्स गोइंग टू बी, वी आर रनिंग इन आवर 8th ईयर नाउ, एंड 8 ईयर से हम कर रहे हैं. एंड I will not hesitate to say this that I have asked whenever I needed any kind of a donation, I've asked my mother-in-law, I've asked my husband, and blindly they have given me money ki bhai you're doing something good, so go ahead, we are there with you. अब उन्नति की शुरुआत कैसे हुई और बड़ा मुझे आप सबकी बातें सुन के एक चीज हम सब में कॉमन है कि हम सबका इंस्पिरेशन हमारी मदर्स है. और अब और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जरूरी बात है जो हम सब लोगों ने मिस आउट कर दिया कि बचपन कितना इम्पोर्टेंट है. आज हम सबका बचपन सेटल्ड है, सॉर्टेड था, सेटल था, सॉर्टेड था. हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे फादर्स की वजह से तभी आज हम कुछ बन पाए हैं. और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया कि बेटा अगर किसी का बचपन सुधार दोगे तो उसका बचपन सुधर ही जाएगा. सो आई एम ओनली वर्किंग ऑन द बचपन पार्ट. और मुझे मेरी मम्मा का बचपन वॉज नॉट वेरी गुड, बट शी मेड श्योर कि मेरा, मेरी ट्विन सिस्टर का, मेरी एल्डर सिस्टर का बचपन बहुत ही मेमोरेबल हो, बहुत ही स्पेशल. तो आज अगर मेरे मुंह पे ये स्माइल है और मेरे अंदर एक ज़ील है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माय मदर एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय फादर. और नोएडा जैसे जगह पे वेयर आई डिड नॉट न्यू एनीबॉडी एक्सेप्ट माय ओन फैमिली, मैंने उन्नति का शुरुआत करा. और जब 8 साल पहले मेरे पास जो एक बच्चा आया था वो सर झुका के आया था, आज आंखों से आंखें मिला के बात करता है. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. और मेरे ही स्टूडेंट्स आज बाय गॉड्स ग्रेस इतना अच्छा कर रहे हैं
कि जो एक वो उन्नति की जो मैंने मशाल जलाई थी, अ, वो बच्चे अब आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और बाकी बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये पर्पस है कि बच्चे जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बने, बस ये जो मशाल है जो मैंने जलाई है वो बस उसको आगे फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, जिन्होंने मुझे सबसे बेस्ट एजुकेशन दिया। और मैंने जब उन्नति की शुरुआत करी थी, मैं आई लेफ्ट माई हाई पेइंग जॉब एंड आप भी समझते हैं कि जब आपको अपना हाई पेइंग जॉब छोड़ना पड़े टू रेज योर किड्स, इट्स नॉट इजी। आपको समझ नहीं आता कि आप, इतना लोनली लगता है कि आप क्या करो। लेकिन जब मैंने उन्नति की शुरुआत करी, मुझे लग रहा था कि शायद ये बच्चे मेरे पास 1 महीने के बाद तो आएंगे ही नहीं। बट मैंने अपनी मम्मा को देखा था कि मेरी मम्मा इज अ टीचर, शी इज एन इंग्लिश टीचर। मैंने अपनी मम्मा को देखा था कि मम्मा के पास आफ्टर स्कूल बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, एंड एट दैट टाइम माई मदर वॉज नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम देम। तो हम हमेशा मम्मा को बोलते थे, मम्मा आप कैसे पढ़ा रहे हो इन बच्चों को। माई मम्मा यूज टू चेक नोटबुक्स एज इफ शी वाज रीडिंग अ बाइबल और एज इफ शी वाज रीडिंग अ रामायण। तो मुझे हमेशा लगता था मम्मा इतनी शिद्दत से चेकिंग कर रही है, इतनी शिद्दत से पढ़ा रही है, ऐसा लगता था जैसे कि ये कोई टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ये कोई पूजा कर रही है मम्मा। एंड मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा व्हाई आर यू टेकिंग इट सो सीरियसली। मम्मा कहती है मेरा एक स्टूडेंट भी अगर अच्छे से इंग्लिश बोलने लग जाएगा तो बाकी बच्चे, बाकी उनकी फैमिलीज भी सॉर्टेड हो जाएंगी, उनकी फैमिलीज भी शिक्षित हो जाएंगी। दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश दैट शी अंडरस्टूड बैक देन। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मम्मा की स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, जैसे डेजी मैम ने और रंजीता मैम ने कहा कि बच्चों को याद ही नहीं रहता है, मम्मा को भी याद नहीं रहता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इससे तो हमने ये सीखा कि नेकी करो दरिया में डाल। सही है। तो हाँ जी। और लास्ट में मैं ये बस एक छोटी सी बात है आई वुड लाइक टू शेयर कि मम्मा ने ये बात कही थी कि अगर हर हर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरा सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हम में से हर कोई अपने घर में एक विद्यालय खोले, एक क्लासरूम खोले, एक बच्चे को शिक्षित कर ले, तो इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सोल्यूशन हमें जरूर मिल जाएगा। Thank you so much everyone for listening to me. And my mother is also a writer. She has recently started writing books, so you can find her books. Her name is Usha Vardhan Sharma on Amazon and Flipkart. Thank you everyone for listening to me. थैंक यू सो मच शिरीन। एंड सबसे अच्छी बात मुझे उषा जी की ये लगी कि बचपन सुधार लो तो बचपन सुधर जाएगा। इट इज वेरी वेरी ट्रू। किसी का बचपन सुधर गया तो बचपन अपने आप सुधर जाएगा। सो नेक्स्ट कमिंग ऑन इज अपरामिता मुखोपाध्याय, बट उससे पहले सुदीप्ति कुछ कहना चाहती है, तो सुदीप्ति फटाफट बताओ क्या बोलना है, देन वी टेक ऑन अपरामिता। बिल्कुल। थैंक्स शरीन ये बोलने के लिए कि हम सब के लिए मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मैं तो और ज़्यादा प्रिविलेज समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी की मम्मी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो बोनस मेरे लिए पास ऑलरेडी था। सो उनसे जो कुछ भी मैंने लर्न किया उसके बेसिस पे, और जो क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मैं लोगों की लाइफ आसान करना चाहती हूँ, 2023 10 लाख प्लस लाइव्स टच करना चाहती हूँ। और आपने बताया कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाती हैं, तो मैं एक ऑथर भी हूँ, मल्टीपल बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो मेरी एक बुक है ABCD ऑफ एफर्मेशन। इसमें अपने ब्रेन चाइल्ड को ट्रेन करने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स शेयर करी है। सो आई वुड लाइक टू गिव 51 बुक्स टू शरीन फॉर हर किड्स on this platform, and otherwise for rest of the people जो देख रहे हैं, Amazon पर भी बुक अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि आप इतना प्यारा काम कर रहे हो, उन बच्चों की ज़िंदगी आसान करने का काम कर रहे हो, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकें और एक मैजिकल भारत का निर्माण कर सकें, जहाँ पे हम सब की तरह ही हर कोई पावर फील करे, तो कोई भी गिरने वाला होगा ही नहीं और हम सब आगे ही बढ़ते जाएंगे। So I just थैंक wanted यू to सुदीप्ति। add आई एम श्योर शिरीन के जो बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स, दे आर रियली गोइंग टू बेनिफिट इट। आई थिंक वहां पे उसके खुद के बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, उसने थोड़ा सा स्क्रीन को ऑफ कर दिया है। Can I add All one of thing? kids, मेरे बड़े हो गए, इधर उधर चले गए, अब वो मुझे तंग नहीं करते, बाकी सबके छोटे छोटे दे कीप ऑन मंकीइंग अराउंड द होल हाउस। यस रमी जी। Yeah, I just want to add one thing, adding to what Shireen is doing. So in my school also, we like I have promoted one very important project, each one teach one.
So as she was mentioning, so my children also, my students in the school also are doing this project. So every child has taken the responsibility to teach one person. It can be the maid or anyone, and they are teaching, not that they're teaching ABCD to them, they're teaching them values, they're teaching them hygiene, they're teaching them how to read till maybe grade 2 level Hindi at least, so that they are not befooled, by anyone Yeah, else. very So true. that is one project by most of the students are doing it. So I just wanted to add that this thing. Thank you, Thank you Shireen, so for much. doing a good And job. it's a very good initiative. So we come on to Apramita. Welcome, Apramita. आपका थोड़ा freeze हो गया है. Are you there? Yeah, I'm there. Okay, Good थोड़ा evening, सा everyone. screen freeze हो गया है आपका. I can hear you, but your screen has frozen Okay. a little bit. It is okay in my at my end. So I don't I think know. signal problem होगा कोई बात नहीं, but we can continue talking since Yeah. yeah, we can yeah, now it's unfrozen. So Okay. so Apramita is a healer. Just 2 days ago, we had a very beautiful session with Apramita. She is a healer. She is a chakra specialist and theta practitioner and hypnotherapy कराते हैं, trainer हैं, healer हैं. तो बहुत सारी चीजें करती है, and she can really connect you to your spiritual soul. But यहाँ पे I would say Apramita, welcome. But and who is the driving force behind you? Like, we are all phenomenal women out here. I know that. You know that synergy is match. And being a woman in itself, जिसको मैं कहती हूँ ना, दुर्गा के 12 हाथ होते हैं, तो हमारे चाहे 2 ही हैं, पर हम 12 चीजें मैनेज कर लेते हैं. So we all are divine shaktis over here. But यहाँ पे आपकी शक्ति कौन है? Who motivates you? Who is your inspirational force? Who drives Apramita to give the best and heal the world? First of all, good evening, all the beautiful ladies, all the wonderful ladies. It was a treat listening to all of you. And I'm actually very proud to share the platform with you all. You all are doing such a great job, and अगर ऐसे ही और थोड़े से लेडीज आ जाए तो आई डोंट थिंक कि सोसाइटी में मतलब ना तो शिक्षा की कमी रहेगी ना वैल्यूज की कमी रहेगी एंड you all are doing a wonderful job. So first of all, a big applause for every one of you. And I wish everyone a very happy National Women's Day as well as a very happy Holi to you all. So रंगों का त्योहार है और इसके साथ साथ हमारा भी दिन है. So let's will enjoy. इसके साथ So, साथ I just want to answer Ranjita ma'am's question. Actually, uh, it is true that we are very much inspired by our mothers. जैसे मैं भी अपनी माँ से बहुत inspired थी. बचपन से I have seen her. She was a housewife, and we had a joint family kind of system. So I had seen her working like 18 hours a day and still pursuing her passion of singing. So that's where my respect developed towards her. Like, she used to riyaz at night, she used to riyaz in early morning, and after that she used to do all the household works because we had so many guests coming up because our grandparents used to stay with us, and she used to do everything with a smile. एंड मैं भी बड़ी शैतान थी जब वो उनके सिंगिंग टीचर आते थे. आई यूज टू फील वेरी अनॉयड कि शी विल बी अवे फॉर 1 hour फ्रॉम मी, but still she managed and she had a wonderful voice. So she managed to do everything along with her passion, and she only like inspired me to take on my passion, that was my classical dance. So I continued my dance classes. She used to take me to my dance classes, and right now I'm a trained classical Bharatanatyam and Kathak dancer because of her only. And after that, my second inspiration came after my marriage from my husband, who actually inspired me to take on everything which I liked, never judged me. In fact, I got married when I was in the second year of my master's.
in maths. Then I completed my masters. Then he forced me to take on MBA. That हो जाएगा तुमसे करो. And then after my child also I did my MBA. Then I did my B.Ed. Everything I did after my marriage. And then when I wanted to switch on my career from corporate to healing area where he had no knowledge and we didn't know that whether it is okay or not, he supported me. He said, you do whatever you want because I'm there to as a backup, so it's okay, so you fly. So that's how my healing journey started. And right now I have actually have left my corporate jobs and everything, and I am healing people, helping people, and whatever way I can. I always thank God to give me this opportunity to help others to solve their issues which they are not able to solve themselves and which they don't want to discuss to anyone, especially to their loved ones, to their friends. So I'm there for them. That is my, I think that is my blessing. And at the same time I'm taking dance classes also to small kids, and I'm having a wonderful time with them. So right now I'm enjoying my life, and I think I have now got my right kind of path, and I will keep on continuing with in my path till God wants. So that's it, ladies. Thank you so much, Apramida. Thank you so much. Now we come on to Swarleen, and after Swarleen, Prajakta will be coming to you. So, Swarleen is a three times TEDx speaker. She is a mentor, and she's beautiful poetess, not only beautiful by physical beauty, but she writes beautifully also. You have to hear her poetry and poetry in action. वो बहुत अच्छे से conceptualize करके उनके वीडियो बनाती हूँ. मैं कायल हूँ उसकी वीडियोस की. तो आप कभी जाके देखिए, and you can go on to her YouTube channel. You can hear her speak. For being a TEDx speaker three times is not a matter of joke. It needs grit and determination, and Swarleen has it all, and she also mentors kids, unka personality shape karna, unko sikhana. She's running her own business. She's an entrepreneur, and she manages everything so beautifully, just like juggling a ball with that expertise. I wish I had those expertise. I try to be a multitasker. बहुत बारी मैं कर भी लेती हूँ, but sometimes it's not as. But then जब सामने कोई दिखता है ना, I say wow, मुझे भी ऐसा बनना है. And then I take my inspiration from people like you all, from people like Swarleen. फिर मेरे को लगता है यार जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. मैं पूरा नहीं but थोड़ा तो करूंगी. So here's on to Swarleen, and let's hear it from you, Swarleen. Who is your motivation? माने तुम पूरी दुनिया को मोटिवेट करती हो, तुम टेडेक्स में जाती हो, वहां बताती हो, वहां लोगों को मोटिवेट करती हो, पर तुम्हारा सोर्स क्या है इतनी मोटिवेशन का? स्वेलिन स्वेलिन वेट, तुम्हारा ऑडियो ऑफ आ रहा है. आर यू ऑडिबल? बोलो ना. आई कांट हियर यू. यहां नहीं सुनाई दे रहा. मेरे तरफ से इट इज ऑन. From my side, it is on. Swarleen, can you hear us? So I You think can you will hear have it. to exit and rejoin. हाँ, और जब एक बार joining के exit time पे करो. option open रखना हाँ, पड़ेगा. try करो. We'll wait. So after Swarleen, we'll come on to Prajakta, and we'll know your life, Prajakta, because you're an army officer's wife. You have seen ups and downs, and you have seen hard moments when husbands go out, practice camp. So So we'll hear from you. we'll hear from you. And Shama is And also Shama joining. is also joining. Why is Why everything is going? everything going?
एको में क्यों आ रहा है? एको में क्यों आ रहा है? Yeah. Yeah. All right. So can you hear me? Yeah, I can hear you. Oh, perfect. First of all, wishing everybody a very happy International Women's Day and a happy Holi too. Ranjita, तुम हमें ना cloud 9 पर बिठा देती हो. You know, once you start praising us, I think it's like coming from a very mutual admiration club, which is, I think everybody sitting here holds the same for you as well, and applauds to you for carrying out this so well. So you really deserve this cloud. Thank you. And thank you so much, speaking about myself. जब मुझे इतना सारा कोई बोलता है तो मुझे लगता है मेरे बारे में ही बात हो रही है. Oh, it is not being underconfident, but yes, it's like thanking God. It's like gratitude. It's like we did all this. I will not say that I'll not take these compliments because I've worked really hard for this. And thank God that He's given me this moment to be sitting here with you, with all of you, who achieved so much in life. आपने मेरी मोटिवेशन पूछा था. आई वाज हियरिंग एवरीबॉडी. मुझे लगता है मम्मा, नानी, दादी, ये शायद ही कोई वुमन होगी जो बोलेगी कि मेरी मोटिवेशन नहीं है. सो इफ आई स्टार्ट विद माय दादी, वी आर 3 sisters. सो व्हेन माय थर्ड सिस्टर वाज born and a friend started crying at home, oh तेरी तो पोती हो गई, she held her by the arm, took her out and said दोबारा मत आना, she'll become something one day and you better see it. And my youngest one, she's a practicing psychologist in Canada. So that's the wishes that you get from your elders. My nani, an ardent follower of our 10th guru, and I think she's the support who's been like a pillar to our family, who nurtured my mother so well, created that nature in her, and that's where the genes lie. So it came from me. But there's one another woman that I'm definitely going to thank today, my mother-in-law. She was a gem of person. I don't know, I have never ever seen a woman when her daughters used to come her. She passed away because of cancer. So when her daughters used to come, you say, "Arey, jisko aane aao, theek hai. Meri beti to yahi hai, mujhe yahi dekhegi." That is the kind of pride I have lived with. And yet there is one another woman that I cannot thank enough, is the woman inside me and the woman that we have all inside of us. The only thing is that we need to thank that woman if she comes out with those colors. Coincidentally, this is Holi and Women's Day together. How many shades a woman has? We call her as a multitasker, a mother, a teacher, a career woman. If she tells lovingly about your career, that how much she's passionate about her career, never think that she's neglecting her family, because everything is important to her. She's creating that balance. So when I talk of womanhood, I'll definitely read few of my lines, but it's just the first thing that you have to ensure is know yourself. The first thing you should do is to analyze who you are, what your aspirations are. Today, if I ask somebody who you are, somebody's going to tell me I'm a teacher. मेरी खुद की story chalk से talk तक रही है. Right from being in the education industry for 20 good years as a PGT English and then HOD, when I left my job, people would say, "You crazy woman. In 40s, you think of leaving your job. What good are you doing, by becoming an entrepreneur?" And when I came back to my town, winning the International Public Speaking Championship, I was, rewarding myself from the decision that I had taken that I'm going there. Because when I entered there, the room was filled with C people, board people, directors, CEO, Google, Microsoft. And when I told them I'm a teacher, I can't tell you how, like an underdog, I played that role. Such a teacher. Okay. But when the winner was introduced, and I was like, I was like, oh God. It was not that I did not believe in me. It was something that told me this is the time. And when I quit my job, so there's always an inner calling, always an inner calling. And strongly, as Sudeepti said, I think that's where Sudeepti and me click so much. I strongly believe in law of attraction.
whatever you think, whatever you visualize. This universe is like the Amazon storehouse. You go and pick up your stuff and tell it, this is mine. This will belong to you. That's the kind of confidence a woman has to wear. We always talk about the ABC of our image, right? Appearance, behavior, communication. Your appearance is not only your outward appearance of what you're carrying, how you're carrying yourself, it is the inner appearance. The confidence that you wear is the necessary garment you cannot do without. And you know what is the beautiful jewelry? The self esteem that we carry. So make sure that you have goals in life. And necessarily or unnecessarily in everybody's life, it is so much individualistic, getting out of your comfort zone. Because when you're sitting in your comfort zone, you may not be getting that recognition you've been wanting. Because see, success is so much as an individualistic thing. Now when people call me, when I went to United Nations as a speaker, when I spoke at the United Nations front for the first time, I could see my people beaming with pride. All those said, our teacher here, they were like, oh, she spoke at United Nations. And to me, what mattered the most was not their observation of what I had changed in me, was how I had changed my own self. How I had changed the perception of I am the first daughter-in-law to be working in the entire family. Because my in-laws family came from a kind of a background where it was like all riches and riches, no women working, and I had to break that bias. That day when people said, "You work," and my husband said, "Why not? She will definitely let her go out." And today the same people came, यार हमारे बच्चों को बताना क्या कराना है. That pride of not taking the pride in your head, but having it sweltering in your heart, that this is what you have done for yourself. That kind of being yourself, working on your own self confidence, and more on that, educating yourself. Today when I work with a lot of universities, IITs, IIMs I'm working with, when I go and teach those startups how to start and initiate, I see a few faces like mine when I didn't know how to give that start and push. And I told my husband, I said, how many I've earned in these 20 years? He said, like, that's okay. I don't even want to know. You go ahead with what you want to do. I said, so the entrepreneurship that I'm going to build on is like with what I have earned. Because I will be counting on my successes and my failures as my own. I will be taking that onus and responsibility. If it is a success, it's mine. I'll be proud of it one day. If it's a failure, I'll come back. I'll make that restart every time I fall and fail. Again, it is, when you think of that, now it is the time when I have to be empowered as a leader. And what does this leader do? I see a lot of university girls having that bright faces, ma'am. We have so many ideas. Your ideas will only work when you put them into action. So Well you've said. got to be empowered in your own self. Rather than thinking of what the other person is thinking of me, think what I'm thinking of my own self. We do not, if I ask anybody out here, it becomes very difficult. It was sometimes with me also. So who are you? I'm a teacher, I'm a banker, I'm a career woman, anything. No, I don't want to ask what you do. I want to ask you, who are you? What does that gives you the most delight? So if we ask for a solo trip, does not mean that we are fed up of you. It just means we just want to revitalize ourselves. Yeah, Very true. it's a continuous, it's an ongoing process. It was a time when we were called that we are the embodiment of peace and sacrifice. We are today, but we are more than empathetic and strong enough to give you that shoulder that we were once looking for. So there are a few lines that I wrote. They call her as an embodiment of peace and sacrifice. Ah, I pity them. They call her as an embodiment of peace and sacrifice. Only she knows what she goes through just to give that rise. The journey of a woman has a beautiful story to narrate. From a daughter to a wife, and then a mother who's so brave.
She's calm and quiet, sober and gentle. The spark to fight with odds a strong metal. You can be friend with her sorrows and grief. She will be quick enough to let you breathe. She carries in herself a radiance of million stars. All she needs is equality, justice, and that's how she blooms like a flower. Do not think she's weak. Do not think she's asking for support. What she wants is her own rights to walk and to walk through those miles and miles of distance. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Swarleen, that was, and it's so good connecting with you. We'll be connecting again on 12th, but I really wanted you to be here. Means, thank you for making out time because you've got a very busy schedule और इसके बाद भी तुम इधर उधर भागती रहोगी मुझे पता है. You are never free. रात 12 बजे तक अभी children are facing board exams, तो यहाँ से वो जाके वो मम्मा बन जाएगी देखो पढ़ो इसको आंसर देखो उसको वो देखो आंसर कैसे करना है स्ट्रेस कैसे नहीं करना है क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है यहाँ से अभी मम्मा का रोल निकालने वाली है वो थोड़ी देर में एंड शी विल बी सिटिंग वहां पे एग्जाम्स करने के लिए यस कविता वेट She's on mute. या मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगी और दो पंक्तियां सुना एक पोयम सुनाना चाहती हूँ मैं क्योंकि अभी कविता मैं थोड़ा वापस आऊं मैं प्राजक्ता को ले लेती हूँ एंड शमा को ले लेती हूँ देन आई विल कम बैक टू यू श्योर हाँ Ranjeeta, can I take your leave? I have another session, as you said. Yeah, I know that. Please. I have another session. Thank you so much. It was so nice meeting all of you sitting here. It's a pleasure that I just could come here. Thank you so much. We're very happy that you could make it. Chal. Thank Okay. you. Bye. Bye. So we come back to Prajakta, and Prajakta is an army officer and a mentor. Am I echoing? So I think Prajakta's connection is Prajakta. Good evening, Mrs. Ghai. हाँ अभी तुम्हें बोलो Okay. A very Mute warm everybody else. Yeah, I'll do that. बोलो A very warm good evening to all, first of all. And thank you so much, Mrs. Ghai. This is the first show for me. Really, very thank you so much. Now, inspiration. The inspiration is the most important word for everything and for everyone also. So it is a very important word in our life is to live of successful people. How we are big or small in your success story. So without inspiration, you, me, or anybody else won't be able to achieve success. So the greatest inspiration for me, which I drawn in my life, is from my mother. She's so simple, learner, and dedicated housewife. So out of all the lesson and what she has taught me, the one which is closest to my heart is perseverance. She is the first inspiration in my life. Now second inspiration is my husband. Now just introduce the Mrs. Ghai. He's an army officer. So I'm proudly feel that I'm also very organization part of the organization. You are the silent So rank. Yeah. He always inspired me to everything, to every when I give interviews, when I give something I want to learn something. So he always inspired. He always motivate me. You can do it. Do please. Everything is possible. So second is the inspiration in my life, my husband. And now being an army officer wife, you know, हम छोटे छोटे स्टेशन जाते हैं हर स्टेशन में कुछ दिन तो वहाँ हमें सब इंस्पायर मिले हैं तो हम उनसे ही सीखते हैं सीनियर से हम सीखते हैं वी फॉलो द डायरेक्शंस तो ऐसे ही अलवर में मुझे मिसेस घई मिले हैं सो आई एम रियली थैंक यू सो मच उनके बात करके जो हम कॉन्फिडेंस लो होता है उनके साथ जो बात होती है जो वो सिखाते हैं हमें
तो हमारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है. नो, वी कैन डू. So third inspiration is Mrs. Ghai. Really thank you so much. Every time, every छोटे छोटे चीज़ें होती है तो she taught me, नहीं ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है. तो we are for, you know, the discipline. So Mrs. Ghai, she always taught me. The third inspiration is a Mrs. Ghai. So clap for Mrs. Ghai first time. Really. And now this is my very small story. Yeah, so I am a professionally software engineer, but again घुमा फिरा के वही बात आ जाती है कि बीइंग एंड कि हम हमारा कुछ इसमें करियर कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन. So again, I had done my software professional, so I break it. Then I can tell, and now then I'm entering in my teacher professional. I had done NTT. That is from starting zero. Then I'm a teacher in APPS. So but sometimes he guided me and he supported me. Okay, now when you're comfortable, you again go your professional life. तो इट इज़ मतलब वेरी बेसिक वो हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है हमारे लिए कि हम कैसे उसको फेस करें. बट यू हैव सम पॉजिटिव क्वालिटी, यू हैव सम कॉन्फिडेंस. एंड ऐसे सम बहुत सारे अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लेडीज मतलब जो हमें सिखाते हैं, इंस्पायरेशन की तरफ देते हैं. तो बहुत सारे, तो हम उनसे ही पॉजिटिव वाले सारी चीज़ें हम सीखते हैं. तो ऐसे ही इफ़ यू आर विलिंग टू कंटिन्यू, you will achieve success one fine day. So I would like to share a simple thing. Confidence is the very ability to feel the beautiful without anyone telling you. So let your confidence shine. Thank you so much. Thank you so much, Thank you Prajakta. so much, Prajakta. And next coming Next, on is coming on is Shama Saini. Shama Saini is also a Shama mentor. Saini. Shama Saini is एंड शमा मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देती हूँ यहाँ से, थोड़ा डिस्टर्बेंस एंड एको आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई. कर देते हैं यहाँ से. So थोड़ा disturbance I'll be echo आ doing, रहा था. Echo हुआ है. yes, yes. मैं मिनिमल बोलूंगी अब सो दैट एको ना आए. So you will have to like, So that echo ना I just want to know, please share with the world the inspiration behind Shama. मुझे सब कहानी मालूम है, ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू शेयर कि क्षमा की शक्ति कौन है. ठीक है, but I want you to share. क्षमा क्षमा जब बनती है कैसे बनती है. क्षमा की ओके क्षमा कैसे बनती है. yes good evening ma'am and thank you for giving me such a wonderful opportunity. First of all, I wish a happy Women's Day to all beautiful and courageous women present here. And I think सबने जो बोला है, I think कहीं ना कहीं मैं भी उसमें हूँ. सबकी स्टोरीज में कहीं ना कहीं सबकी सेम है, सिमिलर है कहीं ना कहीं. तो आई थिंक मेरे भी मोटिवेशनल मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर एंड नाउ डेज माई डॉटर, and she knows how to treat me and how to gear me up if I think can't. अरे क्षमा का सिग्नल अभी तक बिल्कुल ठीक था, शी जस्ट ड्रॉप्ड आउट. चलो, जब तक क्षमा वापस आती है तब तक कविता जी आप कुछ बताने वाले थे, 2 लाइनें. सो विल गो ऑन विद दैट. अनम्यूट प्लीज. अनम्यूटेड. आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली इतना अच्छा लगा मुझे सबको सुनना कि मुझे जल्दी जाना था, सच में जाना था, लेकिन मैं नहीं गई. मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाना, क्योंकि क्या कहते हैं ना, आप भले ही सबको मोटिवेट करो लेकिन आपको भी मोटिवेशन चाहिए. वो मुझे मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं गई. क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आवाज आ रही है. तो मैं जल्दी से एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये सबके लिए है.
मन मंथन कर अवतरित हुई मैं आज की नारी। मन मंथन कर अवतरित हुई मैं आज की नारी। सृष्टि सृजन को समर्पित हुई मैं आज की नारी। नया आकाश नई अभिलाषा पाया नया अस्तित्व। माँ बेटी बहन पत्नी ही नहीं मैं हूं एक पूर्ण व्यक्तित्व। आज दुनिया मान रही ये बात हमारी। मन मंथन कर अवतरित हुई मैं आज की नारी। नहीं देनी अब अग्नि परीक्षा मैंने किया विचार। सती नहीं प्रगति करना है मेरा अधिकार। बीत गई दुख की हर रात मेरा है स्वर्णिम प्रभात। शिक्षा से पथ प्रशस्त कर अंधकार से कैसा डर। जीवन पथ की अनुगामी मैं आज की नारी। ज्ञान की हूं मैं अनुरागी मैं आज की नारी। मन मंथन कर अवतरित हुई मैं आज की नारी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। क्षमा आई और क्षमा फिर से गायब हो गई। आई एम ट्राइंग टू मैसेज है वापस आ जाओ, उसका ना आज सिग्नल बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। वो बेचारी आज क्षमा की फ्लेम के जैसे ना फ्लिकर हो रही है, फिर डाउन हो रही है, फिर फ्लिकर हो रही है, फिर डाउन हो रही है। तो रंजीता जी मैं जा सकती हूँ क्या, आपकी आज्ञा है? हाँ हाँ बिल्कुल कविता, डॉक्टर कविता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, बीइंग विद तो अस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। शमा आ जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तब तक आप में से कोई कुछ बताना चाहता है? Ma'am, can I read a poem श्योर written by श्योर my mother? श्योर प्लीज। Yeah, just a minute. हाँ, बोल रही। एक मिनट बोल रही। even सर- Okay, ma'am, this poem my mama has written about me and my sisters. So it goes like this. Three little girls walked into my world to make it so beautiful and complete. Sometimes I feel they are three little angels descending on this earth to spread happiness. Their arrival was announced in special way. Each one tickled in my life like sun's rays, filled my life with warmth and affection, each one trying to grab my attention. Megha, being my first child, was loved and adored by all. She hardly slept in cot or bed as arms were eagerly waiting for her in a queue. How she lighted up everyone's heart, she herself has no clue. At Vaishno Devi Shrine, Megha, at the age of 3, announced the arrival of her twin sisters, probably looking for some more feminine energy. Who would be creators of world? Once, when I conceived, I got a cupboard and said, Megha, you both could keep your clothes in it. She checked me immediately. No, Mama, not two, but three of us. And next month, when I went for a checkup, I came to know that I'd conceived twins. Children are blessed with super natural powers, have direct connection with God's tower. Twins girl came in a package, and one was expected, and the other was a surprise. Difficult to bring up a single child, but it's easy to raise twins, even when they are wild. Keep an eye on each other, hardly bother their mother. Always up to some prank. After mischief, their face go blank. Always supporting each other, what people think about them, they hardly bother. Who says twins are double trouble? Their pleasure doubled with colorful bubbles. Same dresses, same shoes, same hairstyle, same smile, same glint, same tears of crocodile. Expert in confusing parents, teachers, friends when caught, ready to make amends. Just as rain beautifies and purifies the world in the same way, arrival of girls regenerate and glorifies family crown and make it dew pearled. दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इससे अच्छे तरीके से ट्विंस को कोई नहीं बता सकता। डबल ट्रबल भी है Thank you. एंड देन इकट्ठे भोले बन के लाइक आई डिडंट डू इट। सो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई हैव उषा मैम्स बुक्स एंड दे आर लाइक ऑसम। देयर
When I am traveling, I rather than carrying heavy duty books with me and looking like a philosopher, I prefer to carry her book. बड़े आराम से मेरे पर्स में आ जाती है, पतली है, Thank you. ज्यादा जगह भी नहीं लेती, and आराम से मेरे पढ़ते पढ़ते टाइम, because मैं बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं कर पाती हूँ when I'm like moving, because headache होता है. So I need something शॉर्ट, स्वीट, इजी, दिमाग पे ज्यादा भार नहीं होना चाहिए, एंड समथिंग विच इज वेरी लाइट. इतनी मोटी मोटी नॉवल की जगह मैम की एक किताब हो हाथ में, बस जर्नी कट जाती है मेरी. So Shama is back online. Shama Saini, yes, there you are. चलो थोड़ा सा फटाफट, तुम्हारे सिग्नल खत्म होने से पहले तुम बता दो, इससे पहले शमा की लौ फिर हिलनी शुरू हो जाए. ओह, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आपकी मोटिवेशन कभी लौ पिघलने नहीं देगी, डोंट वरी. So we were about you talking about Leksha, your daughter who motivates you. Yes, ma'am. She like every day, what should I tell you? Every day she is motivating me. I like, I'm like a person कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा. I can't do this thing. So she is like, हाँ हाँ आप नहीं कर सकती, रहने दो. And she knows कि where to kick me and where to stop me and कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है. And जहाँ मुझे pinch होता है, she know कि she will do. Ego में करेगी मम्मी जरूर. So like this, and I think every day I meet a person in a life, like ऐसा है कि रोज आप एक न एक पर्सन से मिलते हैं जो आपको रोज मोटिवेट करता है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ही पर्सन, या पेरेंट्स, मदर, फादर, they motivate, but I think every day some or other is motivating you. तो मुझे तो हर रोज कोई ना कोई मोटिवेट करता है. Even my students motivate me every day. But सबसे I अच्छा तो don't तुमको तुम्हारी like to बेटी eat से मिलता fruits. होगा ना. छोड़ो मम्मी, आपकी बेटी की बात नहीं है. Yes, आप क्या करते हो? yes, yes. She's here तो only and she's seeing me. Why you are saying about me? She went out. So thank you so much, and everybody. I don't know why suddenly ये सब ओके आने लग गया है. मैं अभी म्यूटेड है रेस्ट एवरीबॉडी. am I still अभी एको No, नहीं है ना? everything is good now. Good. है तब कम है. I'll go आप slow. नहीं, आप शम्मा को म्यूट कर दीजिए. आई थिंक वहाँ नेटवर्क की वजह से कुछ हो रहा है. Yeah, maybe it's a network issue. So I'll just before this we wind up, I would just like to share. अभी तक मैंने share नहीं किया. My motivation comes from my father. My Ranjita, yes, definitely my mother. just a But second. my father always used to tell आप me. शमा वाला माइक म्यूट कर दीजिए, and then you would be more audible, please. शमा का माइक मैंने म्यूट किया हुआ है, मेरे तरफ से तो म्यूटेड है. It's okay. Yeah. So basically, my motivation, yes, definitely my father, mother, but I'm more of a daddy's girl. So 53 पे भी I'm more of a daddy's girl, and I generally, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो किसी चीज के पीछे पड़ जाना हो, एंड लाइक इवन माई एनिमल लव एंड माई डेडिकेशन टू माई एनिमल्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम माई फादर. So he was a big motivational factor while he was there. Even when he is not there now, I still reflect on what he used to tell me when I get stuck, and that is what kind of makes me go forward. So पापा एक चीज हमेशा मुझे कहते थे कि जब कोई चीज समझ नहीं आती है ना, उसको कभी छोड़ना मत. उसके पीछे इतना पड़ जाओ कि वो चीज अपने आप तुमसे तंग हो जाए और वो अपने आप को ना तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दे, और तुमको माने समझ आ जाए. वो खुद को इतना सिंप्लीफाई कर देगी कि तुम उसको समझ सकोगे. And the next thing, other thing he used to tell me, which was very important, which I tell my daughter also and all the ladies I come across, he used to tell me कि whatever be, a woman should always earn.
चाहे वो 50 पैसा ही क्यों ना कमाए, कोई बात नहीं, पर वो 50 पैसा भी कमाना बहुत जरूरी है, बिकॉज उस 50 पैसे के पीछे तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब छुपी है. And that 50 paisa will also make you realize that if I can get this 50, I can get 50,000. So, whatever you do, always work. खाली कभी नहीं बैठना. So, these are the two mantras of my father that I lived my life by. Though I was there in Alva Public, I retired from there. एंड मेरे रिटायर करने का एक बहुत अच्छा रीजन था, बिकॉज माई हस्बैंड ही वॉज इन द आर्मी, ही रिटायर्ड, देन वी मूव बैक टू बेस इन नोएडा. फिर एवरीबडी आस्क्ड मी, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क अगेन? आई सेड नो, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, माई चेयरमैन अंडर हुम आई हैड वर्कड, उनके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा मुझे. मैं प्लेन ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, मिस्टर अर्जुन जोशी जैसा दूसरा नहीं मिलेगा. बिकॉज when my father was fighting the battle of cancer, and every Friday I used to leave Alwar, I used to come back to Delhi, and every Monday I used to fall back. उसके लिए कितनी छुट्टियां चाहिए होती है एक साल के लिए, आप खुद ही इमेजिन कर लो. एवरी सैटरडे कभी छुट्टी होती है, नहीं होती है, फिर छुट्टी मांगो, फिर ना हो जाती है. सो आई जस्ट स्पोक टू हिम, एंड द ओनली थिंग ही टोल्ड मी, लुक रंजीता, नौकरी आएगी, नौकरी जाएगी, तुम नहीं रहोगी, काम चलेगा. पेरेंट्स लाइफ में एक बार मिलते हैं, जान लगा दो उनके लिए, तुम्हारा काम पूरा करो, छुट्टी पे जाओ, नेवर इग्नोर योर पेरेंट्स. अगर मुझे पता लगा कि तुम रिग्रेट में जी रही हो, देन आई विल नॉट फॉरगिव यू. छुट्टी ले लिए, उसके लिए यू आर फॉरगिवन, बट इफ यू कुड नॉट मेक टाइम फॉर योर पेरेंट्स while they are on their last leg, then I will not forgive you. So ऐसा डायरेक्टर जो है ना, ऐसा चेयरमैन मिलना बहुत मुश्किल है. और जब मैंने अलवर छोड़ा, मैंने नौकरी करना ही छोड़ दिया, बिकॉज ऐसे इंसान मुझे रोज नहीं मिलेंगे. आउट ऑफ माई 29 years ऑफ वर्किंग, एक ऐसा शख्स मिला हु वैल्यूड ह्यूमन लाइव्स मोर देन ही वैल्यूड एनीथिंग. So, वो जो motivation, he stood behind me like a rock when I went through my worst time. I could see my father going down in front of me, and he stood behind me. So today he does not know that I'm talking about him. Honestly, उनको कभी पता ही नहीं होता है. But he was one person, and after I left APS Alwar, I could never work again under anybody, because वो कहते हैं ना, वो दिल से ही नहीं आया. हर कोई तुम्हारे को छुट्टी लेने के लिए इतना गिल्टी फील कराता है ना, कि माने जैसे कि आसमान टूट पड़ता है सर पे. सो दैट इज व्हाई आई रियली फील दैट आयशा स्कूल्स आर ब्लेस्ड अंडर हिज लीडरशिप, with a person like him sitting in the helm, taking care of all his people. एंड आई अगर दोबारा कभी काम करना है तो उन्हीं के नीचे करूंगी, वो मेरे को पता है पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने काम करना ही नहीं. सो यहाँ पे मैंने RN Talks खड़ा करा. दैट इज सो दैट वी कुड गेट ऑल ब्यूटिफुल लाइक माइंडेड पीपल लाइक यू ऑन माई प्लेटफॉर्म, so that I become a launchpad to take you to the world, your ideologies to the world, something that sir had done for me. So I thank you so much, all of you over here, for taking time out today, because I know आज वुमेन्स डे है, होली, किसी के घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई अनअनाउंस्ड आ रहा है, and there are lots of online and offline Women's Day functions are also going on. So in spite of all this, you've all taken out so much time. I'm very grateful to you, and thank you so much for enriching RN Talks today with your presence. Yes, I want, Daisy. I want to say, like, sum up this, like, as you talked about, Arjun Joshi sir, that Women's Day is celebrated in APS as a surprise, एंड हम लोगों को इतना स्पेशल फील कराया जाता है उस दिन, इतना बड़ा सरप्राइज, मतलब हमें मालूम नहीं था. अभी 6th को उन्होंने सेलिब्रेट किया. इट वाज दे डेकोरेटेड द बसेस, हमारे लिए रैंप लगाया गया, रेड कार्पेट बिछाया गया, दे मेड अ कार्ड, दे मेड अ चॉकलेट, दे ऑर्गेनाइज म्यूजिक, दे ऑर्गेनाइज फोटोग्राफ, everything was there. Every year they are doing it in a different way and surprising us to celebrate this Women's Day. So it's an honor.
I know. I can understand that because I was I there with you. I do agree because we are working under him and he's a gem of a person. And the main thing what he values is giving respect to everyone. So that Correct. is the main thing what I respect him for. And he is a health lover and he always promotes that every one of us should be very, very Healthy. fit and उनका strong. बस चले हम सबको मैराथन भगाएंगे. Yes. So our So, gratitude to him for his kind support. Correct. Yes. so thank you so much. With this, we'll close today's session. And I such dil se keh rahi hu, thank you for joining me together today on RN Talks on Thank Thank Women's you you so so Day. much, much. ma'am. Thank We you Thank are you so so much honored. much. for this Yeah. Thank you, everyone. Nice meeting all opportunity. you guys. Thank you, Same everyone. here, It same was a here. pleasure meeting you all. Yeah. Same here. Same here. Nice. Bye bye. So, bye bye. So that was all of us, all established ladies in our own fields, जिन्होंने आज Women's Day पे इकट्ठे हुए हैं. And we have talked about the inspiring men and women in our life who have always pushed us to be a better version of ourselves. We had a few people who were missing today because of sudden guests, and we do miss their presence. But all's well that ends well. I believe in किस्मत और कर्मा. जिसने आना है उसने आना है, और जिसका नहीं लिखा वो नहीं आ पाएगा, whatever be the reason. However much we want it, things happen the way they are willed to happen. So, but on the same note, I would say that leaving not everything on fate and destiny, we women have made and carved our way out. कहते हैं ना, एक नदी जैसे चलते जा रहे हैं, सामने आए हुए पत्थरों को हम घिस घिस के पतला कर देते हैं और अपना रास्ता निकालते चले जाते हैं. दैट इज व्हाट वी आर, द विमेन. सो फॉर ऑल द विमेन वॉचिंग मी आउट देयर, आई वुड से आप सब अपने आप में शक्तियां हो. Take inspiration from all the wonderful ladies we've had today on my platform. We have all faced odds, we've all had our setbacks, and we've all risen above our setbacks, trying to carve an inch for ourselves, एक छोटी सी जगह पैर रखने की इस समाज में. सो नेवर थिंक दैट यू आर गुड फॉर नथिंग. और अगर आपको कोई ये कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा और तुम ना कर सकोगे, तो याद रखिए वो आपका एनिमी नहीं है. इट्स your challenges somehow taunting you to rise above yourself. Take a positive cue from there and move ahead in life. That is what I'll say. Today where I am, today where I stand, मैं अपनी दोस्तों को, अपने सीनियर्स को, पेरेंट्स को, सबको तो थैंक यू बोलती हूँ, फैमिली को. बट एट द सेम टाइम आई थैंक दोज पीपल हु हैव टोल्ड मी तुमसे ना हो पाएगा. My enemies, my foes, for trying to pull me down, because every time they have tried to pull me down, I have emerged stronger. So, this is a big thank you going out to all my foes and people who think that I am their competitor. Thank you for thinking that, but I am not so. I'm very sorry to break that misconception. I compete with myself, and thank you for giving me that dhakka of telling me tumse na ho paega, because that then gets me working. So I take this opportunity to thank my friends, families, as well as my foes for keeping me on the move. Thank you. And that's the end for today. Tomorrow we'll be meeting with the Karamvira awardees, and our sessions of interviews will start again for RN Talks Swami Vivekananda Karamvira Award. Karamvira interviews are going on, and कल से हम वापस उसी पे शुरू हो जाएंगे. Till then, see you. Tata.